पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाबों से गुजर रहा है। पानी के तेज रेले गांव उजाड़ रहे हैं, खेत बहा रहे हैं, सड़कें और पुल तबाह कर रहे हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों जानवर डूब गए हैं और अरबों रुपए की मईशत जमीन बोस हो चुकी है। ऐसे वक्त में सवाल ये पैदा होता है, क्या हम हमेशा तबाही के बाद इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे या कोई ऐसा हल निकालेंगे जो आने वाली नस्लों को महफूज बना सके। यही वो मकाम है जहां इब्राहिम तरावरे की सोच और क़यादत हमारे सामने मिसाल बनकर खड़ी होती है। बर्कीना फासो, जो अफ्रीका का एक छोटा मगर गैर मारूफ मुल्क है, भी उन्हीं मसाइल से दोचार हुआ था। बारिशों के बाद जमीन टूट फूट का शिकार हो जाती थी, खेत तबाह हो जाते थे और लोग अपने मुस्तकबिल को अंधेरों में डूबता देखते थे। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने कहा, हमें बाहर से मदद मांगने की जरूरत नहीं, हम अपने वसाइल से अपनी हिफाजत करेंगे। ये जुमला न सिर्फ बर्कीना फासो के अवाम के लिए हौसले का बायस बना, बल्कि दुनिया के लिए एक नई उन्होंने पुराने टायरों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये वही टायर थे जो कचरे में फेंक दिए जाते थे, जो सड़कों के किनारे गल सड़ रहे थे। इब्राहिम तरावरे ने उन टायरों को पानी रोकने के लिए दीवारों की शक्ल में इस्तेमाल किया। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब अगली बार बारिशें आईं तो सब हैरान रह गए। वही टायर जो कचरे समझे जाते थे, अब बड़े बड़े सैलाबी रेलों को रोकने की ताकत रखते थे। ये कामयाबी सिर्फ एक मंसूबा नहीं थी, बल्कि ये एक सोच की कामयाबी थी। वो सोच जिसे इब्राहिम तरावरे ने दुनिया के सामने रखा, सादगी में ताकत है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान इस कामयाबी से क्या सीख सकता है? हमारे मुल्क में हर साल लाखों टायर कचरे में जाते हैं। ये टायर सड़कों पर पड़े रहते हैं, खेतों में फेंक दिए जाते हैं या फिर जला दिए जाते हैं, जिससे माहौल आलूदा होता है। लेकिन अगर हम उन्हीं टायरों को इब्राहिम तरावरे की तरह इस्तेमाल करें तो क्या होगा? तसव्वुर करें, पाकिस्तान के दरियाओं के किनारे, नालों और बरसाती चैनल्स पर टायरों से मजबूत बंद बन जाए, उनके अंदर कंक्रीट भर दिया जाए और एक कुदरती दीवार खड़ी हो जाए। जब अगली बार बारिशें आएंगी तो पानी का दबाव बराह रास्त जमीन पर नहीं पड़ेगा, टायर झटका जज़ब कर लेंगे और बंद मजबूती से खड़े रहेंगे। इस तरह गांव महफूज रहेंगे, खेत बच जाएंगे और लोग अपनी मेहनत को पानी में बहता नहीं देखेंगे। ये सिर्फ सैलाब से बचाव नहीं, बल्कि एक इनकलाबी सोच है। एक सोच जो हमें सिखाती है कि वसाइल की कमी कभी मसला नहीं होती, असल मसला क़यादत और विजन की कमी है। और यही विजन हमें इब्राहिम तरावरे से मिलता है। पाकिस्तान में अगर ये मॉडल लाया जाए तो न सिर्फ अरबों रुपए की बचत होगी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी। यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए, इब्राहिम तरावरे ने अपने अवाम को सिर्फ सैलाब से नहीं बचाया, बल्कि उन्हें ये यकीन भी दिलाया कि हम दूसरों के मोहताज नहीं हैं। ये सबक पाकिस्तान को भी लेना होगा। अब हमें सोचना है, क्या पाकिस्तान के रहनुमा भी इब्राहिम तरावरे जैसी हिम्मत दिखा सकते हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास वसाइल भी है, अफरादी क़ुव्वत भी है और सबसे बढ़कर एक मेहनती कौम भी है। लेकिन जब तक हमारी क़यादत इब्राहिम तरावरे की तरह इनकलाबी कदम नहीं उठाती, तब तक हम हर साल तबाही के मनाजिर देखते रहेंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान अपने पुराने तरीकों को छोड़े और नए मॉडल्स को अपनाए। ये मॉडल कोई बड़ी मशीनरी या अरबों डॉलर का मंसूबा नहीं मांगता। ये मॉडल सादा है, आसान है और सबसे बढ़कर मुअस्सर है। अगर पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर और दरियाओं के किनारों पर इब्राहिम तरावरे के नक्शे कदम पर अमल किया जाए, तो हम एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो सैलाब से नहीं डरता, बल्कि सैलाब को काबू करता है। दुनिया के रहनुमा आज भी इब्राहिम तरावरे को एक जुर्रतमंद शख्सियत के तौर पर देखते हैं। उनकी मिसाल इस बात का सबूत है कि असल ताकत वसाइल में नहीं, बल्कि सोच में है। अगर पाकिस्तान ये सोच अपना ले तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े होंगे।
Pakistan stands today at the edge of a great challenge. A challenge that has haunted the nation for decades. The devastating floods that return almost every year to destroy lives, homes, farms, and infrastructure. These floods do not only wash away soil and crops, they wash away hopes, dreams, and futures. Entire villages vanish overnight. Bridges collapse under the pressure of raging water. Livestock perish, and millions of people are left with nothing but despair. Every season, the same cycle repeats. Destruction followed by foreign aid appeals. Promises of reconstruction, and then silence until the next disaster. The world sees Pakistan as a victim of nature, helpless before the power of water. But what if there was another way? What if Pakistan could transform this crisis into an opportunity for resilience? Using its own resources, its own people, and its own imagination? This is where the vision of Ibrahim, the young revolutionary leader of Burkina Faso, becomes a shining example. Ibrahim inherited a country that also suffered from floods, soil erosion, and environmental destruction. His people were no strangers to loss and despair, but instead of surrendering to fate, chose to fight. He asked himself a simple but powerful question. Why should we always wait for others to save us? Why should we depend on loans, aid, or outside experts when we have the ability to create solutions from the very ground we stand on? With this conviction, he turned to an unlikely source: old, discarded tires. In most countries, tires are treated as useless waste, left to rot on roadsides or burned, spreading poison in the air. But Ibrahim saw in them a hidden strength. He imagined walls built not from expensive concrete or imported steel, but from these very tires, stacked, filled, placed as barriers against floods. When he shared this vision, many laughed. How could tires, objects designed for cars, stop the mighty floods of Africa? But did not back down. He mobilized his people, encouraged communities to collect every old tire they could find, and set up teams to build protective barriers along riverbanks, canals, and vulnerable fields. Soon, entire regions were lined with these black walls of resilience. And then came the test. The rains returned, the floods rose, the rivers swelled, but this time, something was different. The water met resistance, the tire walls held. The destruction that used to sweep away villages was reduced. The crops that usually drowned survived, and the people who once ran in fear stood in safety. What once was waste had become a shield. What once was trash had become treasure. This was more than just flood control. This was a revolution in thinking. Ibrahim had proven to the world that innovation does not always come from billion-dollar projects or foreign engineers. Sometimes, it comes from the courage to look at the simplest things differently. His leadership showed that solutions can be local, affordable, and sustainable. He taught his people that scarcity of resources is not the problem, lack of vision is. This philosophy is what Pakistan desperately needs today. Every year, Pakistan generates mountains of old tires. They pile up in junkyards, block streets, and poison the environment when burned. But imagine if these millions of tires were collected and turned into barriers, just as did. Imagine the banks of the Indus River lined with tire walls, the canals of Punjab protected with tire shields, the mountain streams of Khyber Pakhtunkhwa controlled by tire defenses. The next time the floods come, instead of collapsing under the pressure, Pakistan would resist. The water would be slowed, redirected, and managed. The villages would stand, the crops would survive, the people would remain in their homes instead of in refugee tents. What today feels like an endless curse could tomorrow become a challenge Pakistan knows how to face. Beyond the technical solution lies a deeper truth: leadership. Ibrahim is admired not because he found a use for tires, but because he gave his people belief. He proved to them that they were not helpless, that they did not need to beg, that they could rise with their own hands. This is the greatest lesson Pakistan can take from him. The people of Pakistan are not weak. They're hardworking, resilient, and brave. What they lack is leadership with vision. Leadership that can see opportunity where others see only trash. Leadership that can turn despair into determination. Pakistan is not a poor nation. It has fertile lands, rivers, mountains, minerals, and a population full of energy and creativity. Yet every flood season it behaves like a powerless victim,
waiting for aid that never arrives on time, depending on promises that are broken again and again. The story of Ibrahim tells us it does not have to be this way. Just as Burkina Faso changed its destiny with something as simple as tires, Pakistan too can change its fate if it dares to believe. The billions of rupees lost every year to floods could be saved. The lives destroyed every year could be protected. And the dignity of the nation could be restored by proving that solutions do not always come from outside, but from within. Imagine the headlines across the world. Pakistan stops, floods with tire barriers. Imagine the pride of children growing up in villages that no longer sink. Imagine farmers celebrating harvests instead of crying over drowned fields. Imagine a nation standing tall, not as a victim of climate disasters, but as an innovator, a survivor, and a leader for others to follow. This vision is not a fantasy. It is a possibility waiting to be embraced. And at the heart of this vision stands the example of Ibrahim. He is more than just a leader of Burkina Faso. He is a symbol of courage, creativity, and self-reliance. He represents the spirit that says, "We will not bow to disaster. We will not surrender to dependency. We will rise with what we have." Pakistan has the chance to follow this path, has the chance to write a new chapter in its history. One where floods no longer mean destruction but resilience. One where the people no longer wait for aid but build their own defenses. One where every old tire becomes a stone in the wall of survival. The choice is clear. Remain in the cycle of destruction and dependency, or embrace the spirit of Ibrahim and stand tall against the waters. The future of Pakistan depends on this choice, and the time to decide is now.